समझते हैं। सर अब मैं इसकी आवाज मैं सुन रहा हूं, अपने प्रदेश की है क्या? चलिए आपके मित्र के बेटी सर अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश नहीं चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग विदेश घूमते हैं तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्फ इसलिए नहीं होता है, इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है सर। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा मैं लेकर। सर किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप। सर आई विल 5 मिनट्स आई कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो, हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। सर एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं, कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। यह भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कांग्रेस के भी जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है? वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो। पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेस आर वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द इंक्रोचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर द गार्ब ऑफ वक्फ। तो उनको लगता है बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हाँ? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर,
दो तीन बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर एक, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर दो, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए, ये उसके लिए रास्ता खोलता है। और सर तीसरी बात, इस बिल में बड़े बड़े नामी गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, महिलाएं, सिविल सोसाइटी सब आके देखने वाली है, तो आपको शर्मिंदगी इस बात की है। सर एक बात मैं विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है, मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा अभी, जब आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, संजय जायसवाल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहा था इन लोगों ने क्या इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपके वो दिन लट गए जब आप वीटो लगाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विकास के लिए हर काम करेगी। और बस सर एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बस एक पॉइंट, हमारे ऊपर इन्होंने बहुत आरोप लगाया, एक लगाते हारते जा रहे हैं फिर भी भाषा वही है। लेकिन सर मैं एक बात कहूं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये बात को हमें गर्व है। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया, अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान में फर्क करना है, अगर सड़कें बनी तो क्या ये कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी। वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। सर जिस प्रदेश से हम आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चलता है मामला सर, इनने सड़क मत बना ही, यहाँ वोट ना मिल रही है ना, ये हम नहीं करते, हम सबको एक नजर देखते हैं, वोट दो या न दो। इसलिए कभी कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए, ये देश के हित में है सर। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम ये बदलेंगे देश के लिए, अकलियत के लिए, खवातीनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी। प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है। क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय,
मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी को एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई? यमुना क्या साफ हो गई? स्मार्ट सिटी क्या बन गई? क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए? उनकी क्या दुर्दशा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय, नाकामी केवल यहां तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं केवल एक पुरानी घटना याद करता हूं। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी और तैयारी के साथ कलाकार मुंबई से बुलाए गए थे। हो सकता है वो सहमति दिल्ली से ना रही हो, केवल लखनऊ की सहमति से हो रहा हो कार्यक्रम। और जब कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, मां सीता भी बनकर के कोई आ गया, और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया।
लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जानकारी करिए कि आखिरकार भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, लेकिन हनुमान क्यों नहीं थे? हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। अध्यक्ष महोदय, ये देश मिली जुली संस्कृति से चला है। कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं, अभी कुछ दिन पहले ईद निकली है अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा रही है, न केवल मैं जाता हूं बल्कि कोई दल का नेता ऐसा नहीं न जाता हो उस कार्यक्रम में शामिल होने। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री, सभी धर्मों के नेता आते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या साजिश थी, षड्यंत्र था कि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी। अगर किसी कारण पाबंदी लगी हुई थी तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जानकारी हुई है, किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगी है कि आप नहीं जा सकते वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने। क्या यही भारत है, यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी जहां से आता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय, नहीं कुछ कहना चाहते हैं। नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई? न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए,
लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी, एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत सही। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है, जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से वोट में गिरावट आई है, और खासकर उत्तर प्रदेश में भी,
तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। ये वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। और डर तो ये लगता है कहीं भाजपा वाले दूसरों के पैसा रख करके न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे जिनका हमने सम्मान किया, हमें कहां ले गया और हमें यहाँ छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहाँ आ गए और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिएगा कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। और मैं अध्यक्ष सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदय, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिनका विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। Thank you, madam. On behalf of All India Trinamool Congress, under the leadership of the Mamata Banerjee, I strongly oppose the bill in entirety. Madam, the spirit of my speech is, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. Madam, this present bill covers importantly two areas of the Waqf. One, manage religious affairs of Waqf board. One of the arena is to manage, control, supervision of the religious aspects of the Muslim. Two, providing power to the state government to decide the disputes in respect of the Waqf property, including land and building. Article 26 of the Constitution of India provides that, subject to public order, morality and health, every religious denominations or any section thereof shall have the right, A, to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, B, to manage its own affairs in matter of religion, C,
to own and acquire movable and immovable property. D, to administer such property in accordance to such law. Madam, the Waqf is an institution for religious and charitable purpose. The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because Waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religion duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. Madam, under Article 246, Sub-Article 1, the Parliament has an exclusive power to legislate a law under 7th schedule of list 1 and under Article 246 sub-article 3. The state is having the power, state legislature is having the power to legislate the law, exclusive power. Sir, excuse me, sir. That is to say land comes under list 2, under entry 18 of the state lists. Lands and buildings vested in or in the possession of the state comes under entry 35 of the list 2 of the state list. In the proposed Waqf bill, the Parliament has no power to legislate any law in respect of the land and building vested in possession of the state in respect of the Waqf property, because the state is only having power to legislate such law. Therefore, the Parliament is now encroaching upon the power of the state legislation in deciding the question of the land and building of the Waqf. Thus, it is completely unconstitutional and divorce the Article 246, sub-article 3 of the Constitution of India. This is also hits the basic structure of the Constitution. By exercising any power under list 1 or list 3, state legislative power under list 2 cannot be encroached. There is a difference between a Waqf recognized by the Muslim law and religious endowment and recognized by Hindu law on the one hand and public charitable trust as contemplated by the English law on the other. The question has been considered by the Privy Council in Vidya Bharuti Tirtha versus Bulsami Ayar, long before. Mr. Amir Ali, who delivered the judgment of the board, observed that it is to be remembered that a trust in the sense in which the expression is used in English law, when the gift is directly to an idol or a temple, the season to complete the gift is necessarily effected by human agency. Called by whatever name, he is only the manager or custodian of the idol or the institution. In no case is the property conveyed to or vested in him. Similarly, that is a basic difference. The Honorable Minister, he was speaking about the Hindu trust. The Muslim law relating to trust differs fundamentally from the English law. Hindu trust follows English law. Muslim law doesn't follow English law. That is a basic difference. Mr. Amir Ali said the Mohammedan law owes its origin to a rule laid down by the Prophet of Islam and means the tying up of a property in the ownership of God the Almighty and the devotion of the profits for the benefit of the human beings. As a result of the creation of a Waqf, the rights of the Waqif is extinguished and the ownership is transferred to the Almighty. It is religious. If it is religious, comes within the ambit and scope of Article 26 of the Constitution. The manager of the Waqf is the Mutawalli, the governor, superintendent, curator. But in that capacity, he has no right in the property belonging to the Waqf. The property is not vested in him and he is not a trustee in the legal sense. Therefore, there is no doubt that the Waqf to which the Act applies is essentially features different from the trust as is known to English law.
In Sarabanu versus Union of India, 2017, volume 9, SCC, page 1, the Constitution bench held that any legal provision should be made with the application of known principles of law. If any decision is taken without supporting principles of rule of law, it becomes unpredictable, and such a decision is antithesis of a decision taken in accordance with the rule of law. This proposed bill is just contrary to the well-settled principles of law, which is established in the country, but the judgments have been pronounced not only by the Privy Council, by the Supreme Court of India also. Madam, the various provisions of the Waqf Amendment Bill 2024 is manifestly arbitrary and therefore cannot be passed by the Parliament itself. The Waqf system in Islamic tradition stands as a testament to the enduring values of charity, community welfare, spiritual dedication rooted in the principles of Sadaqat Jariyah. Waqf in India, Waqf properties form the backbone of the Muslim communities, social, cultural, and religious life, playing a pivotal role in maintaining their collective identity. This endowment sustains mosques, madrasas, and cemeteries while providing essential resources to marginalized section of society, especially in an environment where minority communities often struggle for equitable access to public purposes. This is not there. Equality, equitable access is not there in case of the Muslims. That is the reason we are opposing. Over the years, excessive government oversight has raised concerns about the erosion of the autonomy and sanctity of Waqf, which under Islamic law is intended to function independently to serve its religious and charitable purposes. At the heart of the Waqf system administration lies the State Waqf Board, while act as custodian of Waqf properties, ensuring their proper management and alignment with the purposes by Islamic law. These boards have consistently worked to protect Waqf properties from the mismanagement. Madam, the Waqf was centrally first introduced in 1953. Mr. Riju, the Honorable Minister, has said, thereafter so many acts, then 1995 Act has come, Amendment 2013, now it is coming. Now by introducing clause 2, the title of the act has been amended, Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development. There is no rational basis to make such amendment of the title of the act. Every act is intended to make the act more efficient and development purposes. As for example, the Companies Act was enacted in 1956, thereafter reenacted in 2013. The act was brought to regulate the management, empowerment, efficiency and development of the control of the companies. The Waqf Act 1995 had various provisions for management, empowerment, efficiency and development. Therefore, the said proposed amendment to the title is wholly unwarranted. The title, which is being used nearly for 75 years, has no necessity to be amended unless the government wants to have the satisfaction that something new has been done. The proposed amendment to the Waqf Act, which includes a tacit attempt to alter or dilute the historical and religious significance of the term Waqf, is deeply concerning and warrants strong objection. The term Waqf is not merely legal or administrative level. It is a sacred concept deeply rooted in Islamic tradition and jurisprudence. Why you are taking away this? Madam, They want to interfere in please, please. The historical development of Waqf legislation in India, from the Bengal Waqf Act 1934, Uttar Pradesh Muslim Waqf Act 1960, the Waqf Act 1954, and the subsequent unification under the Waqf Act of 1995, has always retained the sanctity of the term. These laws, while designed to provide statutory governance, have consistently respected the essence of Waqf as a concept grounded in Islamic law. Madam, insertion of clause 2A. Insertion of clause 2A tantamount to nullify all earlier judgments
all earlier judgments, degree and orders of any court in respect of the workup and the trust. This attempt is basically taking away the rights of the Muslim, which they have accrued. Any attempt to nullify the Supreme Court judgment by legislative process is illegal and unconstitutional. Clause 3, Roman 9 of the proposed bill that said various sects and subsects have been created. This attempt to create subsect without having any rational object is not a good sign for any religion, caste or creed. If the constitutional provisions empowers the parliament to create caste, subcaste or subclause, only then the parliament can do so. Like the scheduled caste created inside Hindus, but the constitutional provision does not empower the parliament under the guise of the Workup Amendment Bill 2024, create Aga Khani Workup, Bora Workup, etc. The intention to legislate such kind of classification of Workup board based on subsects, the ruling party in the government is having evil intention. If the title speaks about unification, creation of various Workup board on the basis of subsect itself creates a de-unification between the sects and subsects of the Muslims. Madam, Clause 3FA of the said proposed bill defines government organization including municipalities and panchayat and autonomous bodies of the state and central government to a Part 9A of the Constitution. Under the scheme of Part 9A, the municipalities and the panchayats are self-government and autonomous bodies. How the properties of the self-government bodies can be treated as a government properties, madam? In a constitutional provision, it has made it. By this law, panchayat and municipality has been described as a government properties. It is not a government properties, local self-government bodies. Therefore, there is a distinction. Therefore, this provision is bad. Madam, introduction of definition of the government property seems to be mischievous. Why Workup will be allowed to define government property? This is an attempt legalize illegal occupation or Workup property by government organizations. Another sin is there. In our JPC, we have said repeatedly, give us the data what the government has occupied the property. Nothing is there. And in Rajasthan, it is extreme cases. 80% of the property of the Rajasthan, Workup property has been occupied by the Rajasthan government itself. Practicing Islam for at least 5 years is a precondition for making Workup is thoroughly unreasonable, irrational and manifest arbitrary. Under the scheme of the Constitution of India, no person can be compelled to practice his own religion. If no person can be compelled to practice his own religion, then such persons cannot be debarred either to offer his property to God or whether he is Hindu or Muslim or any other religion. Practicing religion means day-to-day performance of his religious duty. In a secular democratic country like us, no one can compel to perform any religious duty. Even such a provision cannot be made either in the Constitution or in any other statute. No mandatory provision can be made for practicing Islam for at least 5 years for making Workup. Even if I discharge my religious duty on my own at any place, I cannot be compelled to speak whether I am performing religious duty or not performing the same. Who is anyone can ask me whether I am performing religious duty or non-religious duty? Is it not a violation of a constitutional right? What the Constitution has given you the power to say, to ask me the question, I am discharging religious duty or not discharging the religious duty? A man can believe in performance of religious duty at any point of time of his life, any point of time, before death even. Performing of a religious duty cannot be the basis belonging to that religion. Even in a Hindu mandir which is governed by an act, like Puri Jagannath temple or Kashi Vishwanath temple, there is no such provision that any person practicing Hindu for at least 5 years and then only can donate anything to the deity. Madam, I can't donate. If I want to donate, it's my choice. How my choice can be controlled? I can donate to Hindu mandir.
I donate to everywhere. I donate in Hindu mandir. I donate in Muslim property. I donate in the Christian property. I donate in the Buddhist property. I donate everywhere. I donate beggars. I donate everywhere. How can you control this act? How can I control? By reason of insertion of this clause, no other person of a religion can make over any property to walk up. The proposed amendment is thoroughly misconceived, arbitrary, irrational, and therefore violates Article 14 of the Constitution of India. Under Clause 3, Roman 9b, existing Clause 3R1 has been omitted. That means walk up by user is being taken away. Walk up by user is a long-standing practice of Muslims. In our country, walk up by user is a very common practice, and decades after decades, rather time immemorial. Walk up by user is a practice. The concept of walk up by user was recognized in our country in the case of courts of words for the property of Magdam Hassan Baksa versus Illahi Baksa and others. 1912, SCC online, page 45. Madam, the Honorable Apex Court in the matter of Sayyid Muhammad Salih Labbai, dead by LR and others versus Muhammad Hanifa versus LR and others, 1976, 4 SCC 780. In paragraph 34, 36, and paragraph 39, categorically accepted this walk up by user. The necessary in case of prayers offered in congregation. A single Muslim can also offer his prayers with or without an imam, but if prayer is in a congregation of a Jannat are offered only behind an imam who leads the prayers. And Islam is an extremely modern and liberal religion. There is no question of any person being denied admission in a mosque for the purpose of offering prayers, and that is why the law is so strict that the moment a person is allowed offer his prayers in a mosque, the mosque becomes dedicated to the public, and therefore it's a waqf property. Therefore, it is a waqf property. Finally, it is not necessary for the dedication of public mosque. Thus, madam, in that judgment it has said, so that when a person erects a building with the object of dedicating it as a mosque and permits people to offer prayers therein without declaring that he has constituted it into a mosque and prayers are offered, there bil jammat, the mosque becomes irrevocably dedicated. It is dedicated. Madam, I just give one instance. In the Raishina village, where the residence of the President of India is there. It was a long back, it's a big village. In the big village, there are so many Muslims are there. One Hindu dedicated his property for offer their namaz. And that is the property, that is the mosque is in front of the parliament. In the front of the parliament. Who has not come here? All Abdul Kalam Azad, so all important political leaders, including Bhutto, and the Imam of that is sitting here as one of our colleagues, member of parliament. If prayers are offered once in a mosque, it is sufficient to constitute a good dedication. Dedication has been clearly said. Paragraph 39 of the judgment, that the founder must declare his intention to dedicate a property for the purpose of mosque. No particular form of declaration is necessary. The declaration can be presumed from the conduct of the founder, either express or implied. If this is the principle of law, is long-standing in our country, how can you say today you have to register, walk up by user? You have to give a declaration. I don't need to. Therefore, you are trying to buy this bill. You are trying to take away the basic reason of all the judgments of the Supreme Court. This is not correct and this is bad. Madam, neither a document nor express words are essential for dedication of religious or public purpose in our country. Such dedication may be implied for user permitted for public and religious purposes for sufficient length of time. The conduct of those properties is presumed to be dedicated to for religious. It has been said by Sri B.K. Mukherjee on Hindu law. Sri B.K. Mukherjee on Hindu law of religious and charitable. I do not think that anyone in India is here now
Today in India, there is anyone who understands Hindu law better than the B.K. Mukherjee? No one. He has said so in his book. Anyway, new concept, smart mans have come like a smartphone. Therefore, everything is being done. In the case of M. Siddiqui, through Elas versus Mahanath Suresh Das, 2021 SCC page 1, it has expressly said walk up by user. Our jurisprudence recognizes the principles of walk up by user, even absent an express deed of dedication. This is being taken away. Now, long judgment I will not read. This is being taken away by this. Therefore, it hits the basic things. Clause 3, subclause 5 of the said proposed bill. The verbal declaration of walk-up has been taken away. This is contrary to the history of creating walk-up by any individual. Several properties are dedicated as walk-up by a good number of persons to be made as walk-up property. Madam, the deletion of the word either verbally or violates the right of the Muslim as protected under Article 25 and 26 of the Constitution. Therefore, it hits the basic structure of the Constitution. In Commissioner of Police versus Acharya Jagadish and the Abbuddhota 2004-12 SCC 770, it comes from our state. When CPM was in a power, they killed Ananda Margis. In that case, this judgment has come. The protection guaranteed under Article 25 and 26 of the Constitution is not confined to matters of doctrine of belief, but extends to act done in purpose of religion, and therefore contains a guarantee for rituals, observances, ceremonies, and mode of worship which are essential or integral part of religion. What is work then? It's an integral part of the religion. Madam, essential part of religion means the core beliefs upon which a religion is founded. Core belief of the Muslim is that Allah is there. I am dedicated my property to the Allah. Therefore, it's a waqf property. It is upon the consensus essential power practice that is superstructure a religion is built, without which religion will be no religion. Madam, nobody can say that essential part or practice of one's religion has changed from a particular date or by an event. The proposed amendment clause 3 proceeds with the assumption that waqf are riddled with the issues of mismanagement. It appears that primary basis of the assumption, very important, the very primary basis of the assumption is the quantum of pending litigation surrounding waqf. If the basis of identifying body as mismanaged in the amount of litigation that is pending against in this cannot be a rational basis of determining the standard of management of body. In fact, the Honorable High Court of Delhi in the case of Union of India, Kiran Manua, he has given the details of the pending cases. If pending cases are the ground for bringing the legislation, now I tell you the figure, statistics. In the pending civil cases in Supreme Court, 64,687. Pending criminal cases in Supreme Court, 18,235. Total pending cases, 82,922. And in waqf, all over India, 14 to 15,000 cases are pending. If it cannot be said to be a basis. Madam, Section 3A, the clause creation of clause 4, Section 3B, insertion of section that mandates that every waqf prior to the commencement of the shall file the details of the waqf property dedicated to waqf. I have already dealt with that. Madam, the waqf board under its bench statute has declared a property to be waqf in the case that the government has to challenge the same before the appropriate court of law. Oh, sorry. Madam, this is a very important, sorry, I have missed it. Now the property, government property, according to minister, the state government officer above the district magistrate will decide the issue. How it can be? How the state can be judge of its own cause? State will decide, this is my property and it will be binding. And the problem is this, the moment it will be claimed, it will not be treated as a waqf property. Madam, title of the land only can be decided by the civil court, not by anybody. And this title, this land, the power which has been given to decide the land, whether it's a government land or not, that is covered
by the state list under entry 18 and entry 35. That is the list 2 of the 7th schedule. Parliament has no power to legislate law in respect of that. If the Waqf board under its main statute has declared a property to be Waqf, in this case the government has to challenge the same before the appropriate court of law. By amending this law, this cannot be done. A person cannot be judge of his own cause. Has to be gone to the civil court. It is well-known principles. Everyone knows about it that it is with a dispute on the civil law and is there. Who will decide? It will be decided by the civil court. The proviso itself indicates a predetermined mind of the government. Then the Waqf board itself is a statutory body. 3C4. If there is any wrong writing in the records of the Waqf board, that can be challenged by the government in accordance with law. The government cannot direct the Waqf board to make the correction. This itself is hit by the doctrine of dictation. Madam, apart from the survey, there are currently the Honorable Supreme Court time and again reiterated. Survey records, they are mostly relying. Madam, the Honorable Supreme Court time and again reiterated that revenue records are not documents of title and they do not vest the right of ownership as a property to the individual named in the land record. Reference are so many references is there. This is an elementary thing. Any law student also know this branch of law. Unfortunately, this has not been taken care of by the central government. Clause 5E, the proposed amendment amounts to create subclause among the Muslims for the purpose of giving birth to give this dispute. Clause 9 of the proposed bill provides to clause 9 is totally unacceptable and it provides 2 members appointed under the subsection shall be non-Muslim. The exclusion of Muslim, the exclusion of Muslim community persons from holding the post of 2 members in the Waqf board is hit by Article 14 of the Constitution of India, which provides equal opportunity to everyone. In the case of Hindu temples, the non-inclusion of Hindus cannot be imagined. We can't imagine. For example, under Section 6, subsection 2(1) of Uttar Pradesh Kashi Vishwanath Temple Act, it has been specifically mentioned that there are 3 eminent Hindu scholars well versed in the Hindu. A line has been set, a point has been taken to see these are the state law, but it is a central law. Law means within the ambit of Article 246 of the Constitution of India. Law doesn't mean beyond that 246. If a law is within the Article 246 of India, there cannot be discrimination between a state law and central law. This is kind of unthinkable stand has been taken. I cannot think about this. After long 44 years practice, I can't think. No, it's a state law. It cannot be compared with the central law. What is that? Law is having its own force. Read Article 13 of the Constitution of India also. What is law? Madam, Clause 11 of the proposed bill seeking amendment of Section 14. That is amendment of original act suffers from same illegalities. Clause 14 of the proposed bill whereby Section 20A of the original act, that is removal of the chairperson by vote of no confidence, has been deleted. Such deletion is also improper, illegal, because if the chairperson does not enjoy the confidence of the other members, how can he sit there? It's a question of democracy. If the chairperson does not enjoy, madam, can you sit there if you don't enjoy the majority's confidence? If you cannot enjoy the majority's confidence, you have to leave. That is the democratic setup in our country. Madam, amendment of Section 36, subsection 3 is effectively taking away the power of the Waqf board. Regarding receiving of registration of Waqf, and such amendment has been empowered the central government in an indirect manner to control everything. All powers have been taken. Why you are not making it, the Honorable Minister? The Minister of Minorities will decide everything. He will be the supreme. Nothing is required. Finished. You can do it. Clause 20 of the bill amending of Section 40 of the original act. If Section 40 is deleted, madam, the Waqf board power itself will be teethless doll. If Section 40 is amended and Section 40 is taken away, the Waqf board will be a teethless doll only. If Section 40, then there is no necessity to keep the Waqf board itself. Do not keep it.
Keep the power with the minister of the central government. Minister will decide what is the necessity of the Waqf board. Everything will be done by him. Because the power to regulate and statutory Waqf board. This is complete. Madam, I will take some time, please. Complete reason I am reading very fast. I am going very fast. Waqf board. The proposed amendment bill under clause 21 seeking amendment of section 46 of the original act once again empowers the central government to make regulations with respect to so and so. Therefore, state power has been taken away. Does it not violate the federal structure of this country? Every power of the state government has been taken away. Only central will do it. That cannot be. It violates the fundamental character of the Constitution. Clause 22, Amendment Section 47 of the Act. The proposed amendment empowers Central to call for the audit of any Waqf board by the CAG. How the CAG can make an audit? CAG can make an audit in a case of consolidated fund. CAG can make an audit in a consolidated fund under the Constitution. How CAG can make an audit beyond the consolidated fund? This is absolutely illegal and improper. Madam, Section 50, under the existing provision of the Waqf board, then comes Section 83. By the proposed amendment, the members of the tribunal have been reduced to 2 and 1 person having knowledge of Muslim law. This has been done, it has been amended. Now the tribunal to order is tribunal to High Court. Tribunal to High Court under appeal. Now it is a statutory appeal. There is no provision for condonation of delay if there is any delay is done. If a direct is a statutory appeal, you have not given any power to grant any interim relief to the persons. How can be an adequate remedy? Earlier it was there. One could have gone on Article 226 of the Constitution for a judicial review. And High Court is having the power to condone delay and also to pass an interim order. This power you have also taken away. Therefore, this provision is not an adequate remedy so far the Waqf property is concerned. Madam, please. Madam, the High Court has not given any power. Madam, 107 and 108. I am going very fast. I am getting very fast. I am not taking even the water even. The proposed amendment has an effect on the decision to replace the survey commissioner. Then the under clause proposed section 107 of the act is deleted and thereby non-applicability of the limitation act. That is divorce. How the limitation act will be applied? If the limitation act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the government. Open, sub खुलो अभी खुल दो रास्ता. इंडिया में चला लगा दो. हिंदू मुस्लिम लगा दो. यही तो इंटेंशन है उन लोग का. क्या होगा? This is not correct. This is completely bad. The proposed Waqf proposal significant. In Hemant Wali sir has also criticized the concept of adverse possession as unjust, urging reforms to protect rightful property. Therefore, this is a this is a clear attempt. This is a clear attempt on the part of the bill to curtail the right of the Muslims in our country. ये ठीक नहीं है, मैडम. हिंदू या मुस्लिम का हसद मत छेड़िए. अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए. एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ. दोस्त मेरे मजामी लगभग में मत छेड़िए. मैडम, हम अपनी जान का दुश्मन के अपना जान कहते हैं. मोहम्मद का इस मिट्टी के हिंदुस्तान कहता है. अब तो मजहब अब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया है. थैंक यू मैडम. माननीय सदस्य श्री ए राजा जी. Madam Chairperson, thank you for the opportunity given to me to express my views on behalf of the DMK party. I have received the courageous speech of Honorable Minister with rapt attention, and I wondered where he got such a courage to explore the entire cock and bull stories in the parliament.
Sir, Madam, I dare to say the Honorable Minister, please go through your speeches tomorrow by text. Compile the text and do tally with the JPC report and the documents submitted with the JPC. If it tallies, I will resign from this house. You recall your memory. When you introduced this bill, you said what prompted to introduce this bill. One of the classical examples that has been given by you, the reason for this bill to be piloted, when you introduced in Tamil Nadu, in Tiruchirappalli district, entire village running thousands of acres were described as work property. JPC came into Tamil Nadu. The district collector came to depose evidence, and the secretary of the revenue department came to the evidence. CEO of the court came to evidence. All three officers came to JPC. The chairman is sitting here. Deposed evidence. The cock and bull story that has been built by you and expressed by you has been demolished. In spite of the cock and bull story, no interference. No interference. Having said the cock and bull story, now we are coming at new cock and bull stories to say the parliament was given to work board. Sir, madam, the irony is that the minorities' rights are going to be protected by way of this bill, where the party is having no members of parliament Muslim community. There is no Muslim MP to introduce and pilot the bill and support the cause of the bill. They are not able to produce a single member of parliament, and they are giving moral advice to us how the secularism can be protected. Madam Chairperson, today it is a remarkable day for the Indian Parliament to design our destiny, whether the country is going to travel, whether the secular country is going to travel in the path which was well beaten by the forefathers of the freedom fighters on the constitution, or a negative path as decided by the communal forces in the country. Sir, I want to start my speech by quoting the Tamil Nadu Assembly passed a resolution. The resolution was moved none other than the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin. The resolution unanimously passed. The stand that I quote, our stand, the work bill introduced by the parliament against minority rights, against religious freedom, unconstitutional, contrary to the purpose of work, inconsistent with judicial findings, unnecessary and confusing. If passed, it will cripple the work institutions and harm the Muslim community. Therefore, the Assembly urges Union government to completely withdraw the work amendment bill. Unquote. Madam Chairperson, is it not a paradoxical question that the political will, sovereign will of the entire country seems to be or deemed to be reflected in this house, whereas Tamil Nadu political will reflected in the state assembly is something not only inconsistent, completely diametrically opposite. This difference and diametrically opposite component is not going to be accepted by you, then there will be a question for integrity of this country. Please note it. Madam Chairperson, I want to take back the house in the year 1949, soon after the independence, when the constitution was made, the constitution making process was on. Of course, you will be happy that you wrote your own favorite leader, the Iron Man of this country, Sardar Vallabhbhai Patel, favorite leader of the government. They are celebrating with false claims. However, I want to put forth my views from the mouth of Sardar Vallabhbhai Patel,
who was the chairman of the advisory committees for minorities in the Constitutional Assembly. He was the chairman. Who are all the members? President of India and President of the Assembly, Rajendra Prasad. Pandit Jawaharlal Nehru, later Prime Minister. Dr. Ambedkar and Dr. Munshi. Headed by Sardar Vallabhbhai Patel, the committee took a decision and a report was placed before the Constitutional Assembly. The Constitutional Assembly report was placed on 25th May 1949. He himself says, I quote, a committee of 5 persons was appointed by the advisory committee in which our revered president was also one of the members. Pandit Jawaharlal Nehru, myself, Mr. Munshi and Dr. Ambedkar were the members of the committee. The committee met and made its report in February, unquote. Finally, he placed the report and moved in the Constituent Assembly. What was his prayer when he was moving? I quote again. If they, that is Muslims, I quote, if they really have come honestly to the conclusion that in the changed conditions of this country, it is in the interest of the all to lay down real and genuine foundation of a secular state, then nothing is better for minorities than to trust the good sense and sense of the fairness of the majority and to place confidence in them. First part, unquote. Second part is very important. Again, I quote. So also, it is for us to happen to be the majority to think about what the minorities feel and how they are treated. But in the long run, it would be in the interest of the all forget that there is anything like majority and minority, this country and that India, there is only one community. With these consideration, sir, I beg to move that report may be adopted, unquote. This is the voice of Sardar Vallabhbhai Patel in the Constitutional Assembly. You are celebrating Constitution. See, now the problem is we want to harvest the legacy of the Sardar Patel. Those who wanted the legacy of the Sardar Patel in the constitutional terms are opposing the bill. Those who wanted to erect the statue of Vallabhbhai Patel and erase the concept of Vallabhbhai Patel wanted to support this bill. That is the problem. Sir, if I am permitted to go to the genesis of the work, which was originally enacted in the year 1954. After that, the act was amended frequently 59, 64, 69. Thereafter, comprehensive amendments were made in the year 1984. My sincere question to the Treasury benches and the Honorable Minister. Right from the 1984, whenever amendments were brought in this House, there was a basis. There were deliberations. There were consultations with stakeholders, which was appointed by either by the Parliament or by the President of India or the Prime Minister of India. 1984 amendment came into existence on the basis of the report submitted by the Waqf Enquiry Committee appointed by the Government of India in the 1970 by the Parliament. So a committee was formed in the year 1970. The report was placed. After 14 years, the amendments were made. I surprised when I went through the document in 1970. What a beautiful and sensible deliberation took place in 1970. In spite of that, the protests were made against 1970. Late, it came in 1984. Madam, if at all so many recommendations were made in 1970, in 1984, the Parliament was enabled to take 2 amendments. One is for limitation, which was extended to 30 years for the properties. The second one is the act applicable to the evacui properties. No other provisions were implemented. Not because of the protests of the Hindus, the protests by the Muslims themselves. It was fairly accepted by the Nehru and government. After that, 1995 Act came into existence. I am an antibiotic, so that I have to take.
See, what I wanted to impress upon the minister and the house, whenever the amendment came into existence, on the reasonable basis, on the institutional outcome, the amendments were done. Take 1995. 1995, how the act came into existence? Sorry. In 1985, the reason statement objection reason, para 2, I quote, comprehensive amendments of the Waqf Act were made in the year 1984, which were based largely on the recommendation of the Waqf Inquiry Committee set up in December 70 to inquire the administration of Waqf all levels and response to a demand made by the parliament members during the discussion of Waqf bill. Only 2 amendments. Thereafter, the demand was made by the Muslim community to have a relook, and accordingly, it was placed in the parliament, and 1995 Act came into existence. Now again I come to 2013. 2013, on what basis? Para 2 of the reasons and objectives. The Prime Minister's high-level committee for preparation of report on social, economic, and educational status of Muslim community, in its report submitted to the Prime Minister on 17 November 2006, which is known as Sachar Committee report. So what I wanted to say, whether it is 84, whether it is 95, whether it is 2013, there were bases, there were consultations, there were consensus arrived. Then the white paper was filed to the parliament. Then they brought the amendments. Now tell me, please tell me, on what basis this bill is being brought in house? On what basis? You can say so many stakeholders. How many stakeholders came to the JPC and substantiated our claim? Nothing. Sir, madam, all right. The way in which the bill is brought and piloted is still itself is something surreptitious measure. Surreptitious. Now, I am coming to the objects and reasons of the present bill. The present bill says they are admitting, para 2, based on the recommendations of the high-level committee under the chairmanship of Justice Sachar and the report of the Joint Parliamentary Committee on Waqf, the Central Waqf Council, and after having detailed consultation and other stakeholders, comprehensive amendments were made in the year 2013. Your admission, unquote. Then you start the same paragraph, I quote, despite the amendments, please hear, despite the amendments, it has been observed that the Act still requires further improvement to effectively address issues related to the powers of the Waqf Board, registration and survey of the properties, removal of encroachment, including the definition of the Waqf. 5 components. You said, in addition to the 2013, even on the basis of the Sachar Committee report, you wanted to address 5 more components according to you, which are missing in the S12 bill, the S12 Act. Let us pursue. Now I come to your five pillars. I can easily demonstrate that the definition of the Waqf, it is nothing but artfully confused for the non-existence of Waqf. Removal of the encroachment, it is nothing but empowering the government to grab the Waqf property. Survey of the property, it is nothing but a mockery, because Government of India already filed an application, filed an affidavit before Supreme Court. More than 90% survey is already over. Now you are coming for survey. Registration of Waqf, it is not at all humanly possible according to your text. I will come to that. Powers of the state boards, it becomes recreation club. I will demonstrate. Sir, as a student of law, I got anguish when see the amendments.
And I challenge the minister with the due humility. Please show one improvement on these 5 heads beyond the 2013 Act. Then I will ready to salute you. You can't. You can't. On the contrary, Madam Chairperson, I have been in the parliament more than 22 years. I know the legislative business. Being a lawyer, I am well versed. But have you come across a bill is being brought to the parliament cunningly and cleverly to remove the amendments which were brought in the 1995 and 2013 after due deliberation and approved by the same parliament? If you really honest, you must repeal the 2013. You must repeal the 1995 because most of the amendments brought in 1995 in 2013 were completely removed by way of this amendment. What does it mean? What does it mean? I want to quote the quote of B.R. Krishna, a known jurist. I quote, Parliament is a great inquest of the nation, the great auditor and ombudsman of the executive, the final arbiter, policy monitor, and destiny discerner of the people, unquote. I dare to charge the government that this parliament is being used as a mere ventilating chamber and it has been undermined. It is nothing but an unpardonable onslaught on the constitution religion. One day you will be repent. Now, I will turn to the provisions of the bill. 5 components, definition of the work. My learned friend, including Kalyan Banerjee, everybody, even Akhilesh, my brother Akhilesh, said about the practicing Islam. Then nobody should be indulged in contrivance. Where you got all this language? I am a Hindu. I may be a believer. I may not be a believer. But when you're entrusting a property, you must measure my honesty, whether I'm honest or not. If I am a fraud, following the Hinduism is useless and nonsense. You never bother about the honesty and transparency. You are always concerned about only religion. That is the problem. Sir, I have not come across such a provision in any other law in any other country. So what has been the contrivance? How can you measure the contrivance? So Islamic practice and I am having, please madam, I can get the time from Congress also. They accepted it. They accepted it. I am coming only definition. Then We could not speak in the so parliament. see the definition of the work itself, the attempt that has been made by the government, according to you were saying that not intended in contrivance, your entire attempt, I want to say it is nothing but a diabolical contrivance. Diabolical contrivance. Then you add new sentences. What are the sentences? Section 3, 3A. 3, what is happening in this country? Have you come across the Transfer of Property Act? Section 3A says only the real and original owner can donate the property they work. What is this? Only owner can transfer. If a non-owner transferring property is not alienated, it is invalid. It is invalid. I can spend my own money. If I am taking money from my brother, it is a stealthy. Why you are bringing such act? I'm not able to understand. Then 3B. No, see, no. Madam, it's a serious issue. Now, all these things are introduced new. Subclass 3C. Any government property identified or declared as work property before or after the commencement of the act shall not be deemed to the work property. How many lawyers in the house I didn't know? How government property identified and declared as a work property. Who identified? Who declared? Who investigated? You will declare, you will identify, this property is my property and it will not deemed as work property.
Yeah, of course, yeah, of course, all constitutional bodies having discretion. Justice Patanjali in 1960 said, yes, we are having judicial discretion, but judicial discretion should not be a caveman discretion. Your discretion here is caveman discretion. So, in the name of the improvement, the government attempts to defeat the concept of work, and you want to snatching the entire work property in the name of the act to the government. Coming to the second, survey of the work properties and removal of the encroachment. That itself is contradictory. Survey of the property is affirmative. Encroachment of the work property is negative. We wanted to club it more in one. Section 4, Madam Chairperson, survey of the property for the work in the S2L Act, in the present act, a survey commissioner has been designated, appointed by the government, independent to the government. He is not an independent government officer. So when dispute comes to the government and the work board, the independent officer must follow the civil procedure code to investigate the title and come to a conclusion. It's a civil code. Now, survey commissioner has been replaced with the district collector. My honest question is, any dispute between the work board and the government, how a collector can be a judge? You know the principle of natural justice. No one can be a judge for his own cause. Same collector is sitting and he is deciding who is the owner of the property. Unknown to the law, unknown to the criminal jurisprudence, unknown to the entire legal fraternity. How collector can investigate? Then this bill want to revisit the encroachment. Survey is over, now encroachment. Please hear me. You said you wanted to revisit the enforcement according to recent object. Section 54 deals with encroachment. Please see your bill. Any small attempt? Did you change a full stop and comma? Did you change a single letter in 54? You did not change anything. But you are claiming in the recent object that we wanted to revisit in the bill. On the contrary, what you did it, as my friend put it, 52A, you wanted to make very stringent laws to protect the minorities of the country. The SOL Act says, the present Act says, rigorous imprisonment and penalty. You are saying that it is simple regressment. Simple imprisonment. And the offense committed in that work part presently is cognizable and non-bailable. You are making it bailable. I want to recall the Bilkis Banu. The same thing is happened here also. The next, sir, then tribunals. In 1995 and 2013, Madam Chairperson, as a student of law, again saying, the creation of tribunal itself, we want to segregate the lengthy process of the judicial process in the civil court and high court and supreme court. That is why we are having so many tribunals. Telecom tribunal is there, income tax tribunal is there. Why? There were a lot of cases in the civil court, district municipal court, subordinate court, then district court, then high court. So such a simple and peculiar matter should be referred to the specific court for which the constitution permits you constitute a tribunal. You constitute a tribunal and very clearly said tribunal decision is final. Why it is final? Already survey commissioner has been conferred with the civil court. He is not an individual man. He is an institution under law. He is following CPC. When he is following Civil Procedure Code and Indian Evidence Act, the SOL Act, he himself in court, first court. The second court is tribunal. Third court, it is permitted in the law, on suo motu or on application, it can go to high court. Where is your problem? Where is your problem? But you wanted to say, tribunal is not final, we will decide. What type of jurisprudence we are having? Then come to the registration. Madam, registration. 36-1. Earlier, 5 minutes. Please, 5 minutes. I will take my time. So, no. If you, yes, minister is having questions.
Registration. आपको इसमें भी जल्दबाजी करना है। Okay, tell. Registration. Come to the registration. Come to the registration. Earlier, the work property can be declared by virtue of section 36(1) as work property after the due process. What are the process? In the act itself says. Now, you want to bring 7A. What 7A says? 7A is a peculiar provision which will defeat the entire work properties. I will read, please permit me to read section 7. Huh? No, section 7. 14, 7 here. Section 7. Oh, no. No. What is removed? 7A. Sorry, Chairperson. No. 7A, now, new provision. It shall not be registered, the property shall not be registered unless the dispute is decided by competent court. The power has been entrusted to the collector. Collector will hear the matter for registration. During the registration, any dispute is found, then the final decision will not be taken. It will be decided by the court. Which court? Up to Supreme Court. Thereafter, section 10, no suit, no appeal will lie upon that. What does it mean? You wanted to say this property is not work property, go for the dispute, it will go to Supreme Court, it will take 30 years. Till then, this property will be deemed as government property. What does it mean? It will be deemed as a government property. What does it mean? Then come to the register. Register also completely impossible in way it was dropped. Madam Chairperson, the constitution of boards, all members have spoken about. I do not take much time. Why you are injecting non-Muslims? HRNC Act are there in each and every act. Hindu Religious Endowment Board Act are there in all states, including Tamil Nadu. What happened in Tamil Nadu? In one temple, so many acres of lands were available under HRNC. Out of the income, HRNC board decided to run a arts college. Arts college. Recruitments were my professors. On merit, one Muslim came. Immediately, RSS and Hindu Munnani gave a categorical statement. It is our property. Why you are accommodating a Muslim professor? Now we are saying property is something different, religion is something different. Baba, don't teach lessons. My prayer is, our prayer is, religion is something different, politics is something different. Don't mix it. Don't mix it. That is our prayer. If you want to save this country with the integration under this secular fabric, please segregate the politics and religion. Now I come to, now I'm concluding. Section 40, very important. Section 40, madam, any property of the work property converted into trust or converted into society's act, none other than else, by the statutory bodies of the concerned state, is a work property. If it is found by the board, then the board can initiate inquiry according to this act by way of survey and by way of the deciding title, and ultimately it comes to a conclusion is work property. If it is not there, you leave it. Why you are removing this provision? What is the reason given to this? It was not at all deliberate in the JPC. Madam Chairperson, Madam, I am closing. Madam, 2 minutes, I am closing. Madam Chairperson, lastly, 108A.
overriding power. That is the safeguard. Whatever be the special act, take it PCR Act, Prevention of Corruption, the civil rights, take it SC/ST, take it dowry prohibition. Whatever be the special legislation man, either by the assembly or by the parliament, such a overriding power must be there to protect the interests of the particular community. Yes. You are removing that. At last, soon after the independence, 1 minute, I am closing it. Soon after the independence, the Prime Minister of India, soon after the Please, independence, Mani sir. you one sentence I read the close. Soon after the independence, Prime Minister of India used to write all the chief ministers of India, all the states. I am quoting the official record. Letter to the chief ministers by the Prime Minister. I quote, I have a great deal of evidence to show an organization which is in the nature of a private army and which is definitely proceeding the strictest Nazi lines, even following the technique of organization. The Nazi party brought Germany to ruin, and I have little doubt if these tendencies are allowed to spread and increase in India, they would do enormous injuries to India. No doubt, India would survive, but she would be grievously wounded and would take long time to recover. Unquote. Who said it? Pandit Jawaharlal Nehru. What is the organization? RSS. Thank you. I want this government. Don't go along with RSS. Come to conclusion. Sansad ji. Madam Chairperson, I rise today to talk about the Waqf Board Amendment Bill 2025. Madam, the Muslim community in our country needs to be provided with support for their upliftment. This minority community faces economic, educational, and social hardships. As per NSSO, nearly 31% of urban Muslims live below the poverty line, madam. Their average monthly per capita expenditure is among the lowest across all major religious groups. Despite constituting 14% of the population, Muslims hold a mere 4 to 5% of government jobs and less than 3% in corporate employment. Their high dropout rates in secondary and higher education adds to their struggles, preventing their upward mobility, madam. Madam, there is a need to take care of their welfare and uplift the lives of the minorities. In the light of these challenges, the presence of the vast Waqf properties valued at over 1.2 lakh crores of rupees and covering approximately 36.18 lakh acres presents an opportunity for economic and social transformation, madam. However, these properties have largely been underutilized due to administrative inefficiencies and mismanagement, and several times with malified intentions. Our party firmly believes that these resources must be used for the welfare of the Muslim community, particularly the women, the youth, and the downtrodden, madam. Madam, there is a need to take care of welfare and the upliftment of the lives of the minorities. In support of this vision, we are the first party that advocated for the establishment of the Joint Parliamentary Committee. The functioning of the Joint Parliamentary Committee has been both extensive and transparent. The committee's engagement was one of the most inclusive in the entire parliamentary history. The committee engaged with 284 stakeholders, 25 state Waqf boards, 15 state governments, and various ministries. A total of 97.27 lakh representatives were received, considered, and discussed, madam. The deliberation spanned over 128 hours and 10 minutes.
The result of this humongous exercise was the 944-page report and a revised bill with 14 amendments. Among these, our party, Telugu Desam Party, suggested three important amendments to ensure the welfare of Muslims. One crucial amendment ensured the prospective application of the Waqf by user clause. This means that all existing Waqf properties registered under this provision will remain protected, even without a Waqf deed. By ensuring this amendment, the TDP safeguarded the interest of the Muslim community and ensured that their properties shall remain intact. Our property, madam, also played a pivotal role in strengthening state authority regarding disputes over wrongful claims with the Waqf boards. We moved an amendment replacing the district collector with a designated officer above the rank of the collector to handle such disputes. This amendment empowered state governments to appoint a higher ranking officer, ensuring a more robust and fair and broader and larger resolution process, because we feel, madam, that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities. The TDP also proposed an amendment to extend the timeline for uploading work property documents on the central portal. Originally, the bill required registration within 6 months, but recognizing practical challenges, we pushed for an extension. The JPC accepted, we are thankful, our proposal, allowing the Waqf Tribunal to grant extensions in selected cases where valid reasons for delay exist. This ensures that all Waqf properties have sufficient time for proper registration. All this, madam, we do because we still feel that there is a need to take care of welfare and upliftment of the lives of the minorities. The TDP has put in effort to safeguard the Muslim interest and ensure their welfare. The YSRCP has merely played politics instead of working for the true development of the minorities in the state. Their representative on the JPC has attended just 18 of the 38 JPC meetings, whereas our party has attended close to 90% of the meetings to protect the rights of the minorities. They have treated Muslims as nothing more than a word bank, while we see them as an integral community that deserves protection and upliftment. The TDP's role in shaping this bill shows our commitment for Muslim and minority welfare. Ensuring the welfare of minorities has always been the top priority since the formation of our party, madam. Under the leadership of our founder, Sri N.T. Ramarao Garu, in 1985, TDP established Minorities Finance Corporation, the first of its kind in India to provide financial assistance and business opportunities to Muslims. Under the visionary leadership of Sri Chandrababu Naidu Garu, welfare, upliftment, empowerment for the minorities has always remained a priority for the Telugu Desam Party. Madam, on 25 July 2002, Dr. APJ Kalam was sworn in as the 11th President of India. Please recall that our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu, proposed his name. Again, ma'am, in 1991, Sri Laljan Pasha Ji has been elected as Honorable Member of Parliament to this House. In 1996, TDP declared Urdu as a second official language under the leadership of CM Chandrababu Naidu Ji, improving educational and administrative opportunities for Muslims. In 1998, TDP established Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad, one more university in Kurnool. In 2001, TDP established Hajj
house in Hyderabad, one more in Vijayawada, and also launched air travel facilities. We introduced Ramzan Tofa scheme, providing financial assistance to 10 lakh Muslim families annually, spending 50 to 60 crore each year. Provided monthly salaries to imams and mozams ranging from 5,000 to 10,000. Spent 4,000 crores on minority welfare programs between 2014 and 2019, introduced the Dulhan scheme, offering financial aid of 163 crores to 32,722 brides. Started foreign education scheme, providing 10 lakh each to 500 Muslim students annually. Held job fairs distributing 113 crore scholarships to 5 lakh Muslim students. Invested 31.64 crores in post-matric scholarships for more than 39,000 Muslim students. In conclusion, Madam, why we did all this? Because we strongly believe that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities. In conclusion, the Telugu Desam Party has always stood by the welfare and upliftment of the Muslim community, ensuring their rights and development. In line with this commitment, I urge the government to consider providing flexibility to the state governments in deciding the composition of the Waqf boards. Given that Andhra Pradesh has already enacted the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions Endowments Act 1987, permitting religious autonomy. Providing states the power to determine composition of the Waqf boards will ensure the welfare of the Muslim community. This step will ensure the TDP's dedication to the inclusive growth and welfare of the communities. Madam, once again, in the interest of the Muslim women, in the interest of the Muslim youth, in the interest of the Muslim downtrodden, hoping that the earlier suggestion of giving flexibility to the state governments will be considered, will be taken into consideration while framing the rules of the Act. We support the Waqf Amendment Bill 2025. Thank you, Madam, for giving me this opportunity. माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन जी। अरे हाँ इतना तो तुम्ही ना क्या सेटिंग हुआ? आपका सोर्सेस अच्छे नहीं, आपको सोर्सेस अच्छे नहीं। सभापति महोदय, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है, जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब करने किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा
अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको कहा क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है, आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई, क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे, नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे। अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में, तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदया, इस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मुसलमान समुदाय के अंदर, ये नैरेटिव तो आप बना नहीं रहे हैं, मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्त पर कोई है, वक्त में उसका बेचारे का कोई शे है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई शे है? आप पूरे देश में, आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कराइए, तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहां हैं? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है।
नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको 1 मिनट सुनिए, जयप्रकाश जी आपको बता देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आप तो आजादी के बाद से इतना दिन शासन किए, कौन सा काम आपने किया बिहार में और मुसलमानों के हक में, ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पो चिल्पो करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। तो इसलिए आज वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा? नैरेटिव सेट करते रहिए। और उसके बाद आप बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिलाओं को सशक्त करना है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त करती है। अरे कहां महिलाओं को? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है क्या? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है? आज अगर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को वक्फ के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको क्यों विरोध हो रहा है? मुस्लिम समाज के महिलाओं को भी सशक्तिकरण का हक है, उनके सशक्तिकरण का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से आपका नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे लगता है मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मोदी जी पारदर्शी, मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। वो विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आप देश को संकुचित रखना चाहते हैं, देश को बांट के वोट के लिए धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं, जो आपका चलने वाला नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी, बहुत लोगों ने कहा इस संशोधन के माध्यम से डीएम को अधिकार क्यों दे दिया गया। बहुत लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड तक की बात करी, हमको हंसी आ रही थी। सीपीसी से क्या लेना देना है? गाय का सील भैंस में, भैंस का सील सिंह जो है गाय में लगा रहे हैं। अरे भाई, इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन कौन होता है? इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर यह अधिकार दिया गया था, कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसका विरोध किया। तो भाई सरकार ने सोचा कि चलिए
आपके विरोध को मान लेते हैं और उससे बड़े अधिकारी को दे दिया ये अधिकार। लेकिन रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है। आपका अगर झगड़ा होगा, मेरी संपत्ति का अगर झगड़ा होगा, वेणुगोपाल जी आपकी संपत्ति का किसी से झगड़ा होगा, तो कहां जाते हैं आप? खतियान देखने के पास? किसके पास जाते हैं? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। एक आम मुसलमान भी आज की तारीख में, आम नागरिक अगर मुसलमान का है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई विवाद होता है तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ और वहीं से उसको न्याय मिलता है। तो आम मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा। अब वक्फ को नहीं जाना है, इसलिए कि वक्फ की जमींदारी है। पूरे वक्फ की संपत्ति पर उसको समाप्त करने का काम, पारदर्शिता लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की बात आती है। भाई क्या ट्रिब्यूनल में क्या दिक्कत है? आज का क्या कानून है? आज का क्या कानून है? आज का कानून यह है जो पाप किया आपने 2013 में। आज का कानून क्या है कि अगर कोई वक्त, जो सुबह में रिजिजू साहब मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि धारा 40 को खत्म कर दिया हमने। बड़ा बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र हैं किरण रिजिजू साहब जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग को, लोकसभा की बिल्डिंग को बचा लेने का काम किया। नहीं तो कल कह देता कि ये भी मेरा वक्त का संपत्ति है। भाई आपका कौन सा कानून है इस देश में? इस देश में ऐसा कहीं कानून होता है? कोई प्रजातांत्रिक, हम आजादी के बाद से इतने दिनों से इस देश को चला रहे हैं, कौन सा इस देश में ऐसा कानून है कि वक्फ ने जिस पर रख दिया हाथ, वक्फ की संपत्ति हो गई? अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी जिस पार्टी जो है, जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है, यही आपका है, वायरल है। जरा बाहर निकल के वेणुगोपाल जी देख लीजिए, नहीं हो तो बोलिएगा, हम भेज देंगे, मेरे पास भी है, हम भी भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। तो आप वक्फ की संपत्ति को अगर आज समाप्त कर दिया उस धारा को, तो बड़ा बढ़िया काम किया। हम धन्यवाद देते हैं रिजिजू साहब के, जिन्होंने इस देश को बचा लिया और इस देश के कई लोगों को इस शिकंजे में फंसने से बचा लेने का काम इन्होंने किया है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब ट्रिब्यूनल की बात है। ट्रिब्यूनल का क्या था भाई? कल इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल में जाके आप साबित करिए कि वक्फ का संपत्ति नहीं है, ये मेरा संपत्ति है। और उसको 5 साल तक, 10 साल तक ट्रिब्यूनल सुनता रहेगा और एक बार ट्रिब्यूनल फैसला दे दिया कि वक्फ वाले सही है, आप फिर कहीं नहीं जाइए, फिर उसी में रिवीजन फाइल करिए। यही तो आज का कानून था, जिसको खत्म करके इस सरकार ने पारदर्शिता